Okay, Arya, Swara, welcome. Babu, can we start our new point today? We already completed about alkane, alkene. Today our point is alkyne. Finally, we'll complete arene also. Alkyne, what is the condition to be alkyne compound? Minimum one triple bond should be present between two carbon atoms. It is the condition to be alkyne compound. Its general formula is CnH twice n minus 2. Yes, when we substitute the n value 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alkyne having one carbon is not possible because as per definition, the hydrocarbon compound having ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स. अल्काइन बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ तो एक ही कार्बन है. दैट्स व्हाई अल्काइन हैविंग 1 कार्बन इज नॉट पॉसिबल. यस, देन N is equal to 2. C2H2 ethyne. In case of alkyne, ine is to be used as suffix. Doing the nomenclature, in case of alkane, ane, n is to be used as suffix. Where in case of alkene, ene is to be used as suffix. In case of alkyne, yne, ine. Ethyne, 2 carbon. Alkane having 2 carbon is ethane. Alkyne will be ethyne, otherwise you can say acetylene. Its commercial name is acetylene. First of all, yes, 2 carbon, 2 कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड रख दो, अल्काइन है तो. कार्बन possess tetravalency property, one valency of each carbon atom is to be satisfied by 2 hydrogen atoms. So this is a structural formula of ethyne. Yeah, acetylene. When N value is 3, C3H4, propyne. Now you see, in case of 3 carbon, 1, 2, 3, we can put triple bond between first and second, otherwise second and third. That's why there are 2 possible structure of propyne. CH triple bond C, single bond CH3. Otherwise CH3 single triple bond C, single bond CH. Yes, I'm sorry, after giving the rotation 180-degree rotation, CH3 single bond C, triple bond CH. This is propyne. When N value is 4, at that time C4H6. Butane, alkane having 4 carbon is known as butane. Here it will become butane. In butane, 4 carbons are present. You can put triple bond between first and second, first structure. Between second and third, second possible structure. Third and fourth, third possible structure. That's why structure of butane will be 3. Nomenclature में हम लेंगे. When N value is 5, at that time C5H8 is the molecular formula. Alkane having 5 carbon is known as a pentane. The alkyne having 5 carbon is known as a pentyne. In pentane, 5 carbons are possible in linear chain. Yes, 1 triple bond between first and second, second and third, third and fourth, fourth and fifth. 1, 2, 3, 4. That's why pentane structures 4 types के possible है. Pentyne. That's why there are 4 possible structures of pentyne.
Then N value 6. At that time, C6H10. This is our molecular formula. Alkane having 6 carbon is known as a hexane. But we are talking about the alkyne. That's why we can say hexyne. Yes, in case of hexyne, how many possible structure? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 possible structure. ये नीचे जाएंगे. अच्छा, now you see, ethyne 2 carbon. Yes, you see what is the difference between molecular formula successive number. Yes, from ethyne to propyne जाएंगे, propyne to butyne जाएंगे, butyne to pentyne जाएंगे, pentyne to hexane जाएंगे. Continuously 1 carbon increment होता है. और हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट कितना है? 2 हाइड्रोजन का. This is one type of homologous series in which, yes, difference of 1 carbon and 2 hydrogen between 2 successive members, and functional group is triple bond. Either functional group will be same, but the, yes, CH2 difference will be constant. That's why it is known as a one type of homologous series of alkyne compound. Now, we'll see arene compound. A simple and first member, very common member of this compound is a benzene. Name benzene है. Molecular formula C6H6 है. Now you see, carbon possess tetravalency property means carbon 4 bond बनाएगा, और हाइड्रोजन possess monovalency property means हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा. तो जरा समझो कि इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन में क्या है. इनके बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने they have suggested their own opinion. Finally, Kekule is the name of scientist. He has suggested कोई भी chemical compound का structure ऐसा होना चाहिए which can, yes, explain both physical and chemical properties satisfactorily. तो एक साइंटिस्ट केमिकल, यस, बेंजीन की फार्मूला सजेस्ट करता, दूसरा साइंटिस्ट उसकी लिमिटेशन दिखाता, वो कैंसिल होगा, दूसरा अपना स्ट्रक्चर देगा, उनकी भी कोई लिमिटेशन होगी, वो निकल जाएगा, तीसरा साइंटिस्ट अपना स्ट्रक्चर देगा. फाइनली केक्यूलर ने जो स्ट्रक्चर दिया, उसने क्या बताया कि बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ साइक्लिक सिस्टम. वन मोर थिंग, each carbon atom is attached with 1 hydrogen atom. Now you see, in this cycle, how many bonds of each carbon is satisfied? 3. एक बॉन्ड सभी कार्बन का कम है. तो कैलकुलेटर ने बताया 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रख दो अल्टरनेट पोजीशन पे. ऐसे चलो, ये डबल बॉन्ड रखा तो ये कार्बन 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4. यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड रखो तो यहां इनके बॉन्ड 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4. यहां रख दो तो 1 2 3 4 1 2 3 4. सेकंड पॉसिबिलिटी, यहां नहीं, यहां रख दो. चलो, सेकंड हम यहां रखेंगे, इन दोनों कार्बन की टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है. यहां रखेंगे तो ये कार्बन की 5 हो जाएगी, तो यहां नहीं रखना है, अल्टरनेट पोजीशन पे यहां रख दो, इन दोनों की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी. फिर यहां रख दो, इन दोनों की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी. दैट्स व्हाई, yes, this is the structural formula of benzene. There are 2 possible structure. Position 1,
2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is structure and this is structure A, this is structure B. Now you see, in structure A, single bond between first and second carbon. B में फर्स्ट और सेकंड के बीच डबल बॉन्ड है. बी में सेकंड और थर्ड के बीच सिंगल बॉन्ड है. तो लेकिन ए में सेकंड और थर्ड के बीच डबल बॉन्ड है. थर्ड और फोर्थ के बीच सिंगल बॉन्ड है. थर्ड और फोर्थ के बीच यहाँ डबल. ये स्ट्रक्चर टोटली दोनों ऑपोजिट है, लेकिन उसका मीनिंग सेम है. Benzene is consist of 6 carbon and 6 hydrogen atoms. 6 carbon atoms are arranged in a cyclic system, otherwise you can say hexagonal cyclic system. And one more thing, each carbon atom is attached with hydrogen through single bond. And moreover, in 6 carbon cycle there is a presence of 3 double bond, and position of 3 double bond is alternate. इन दोनों का मीनिंग सेम है. ये हाइड्रोजन को कार्बन के साथ लिख दे हर एक, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा. सिंपली हर बार ऐसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. मीन्स ये कॉर्नर पे क्या है, 1, 2, 3 बॉन्ड, यहाँ CH है, हर एक कॉर्नर पे CH है. ये बहुत डिटेल में आएगा बेंजीन. तो दिस इज आवर लास्ट पॉइंट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला. ओके बाबू, कंप्लीट करें. ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. चलो, थैंक यू.